Hi, thank you so much for joining this video training. And as a financial advisor, as a life insurance advisor, I know this is the best ever step you have taken because धंधा तो हम लोग करते हैं राइट। और धंधा करते समय अगर हमको और सीख मिले जो कि हम लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए काम में आ सकता है, दैट इज वेरी 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 पावरफुल। सो दिस एंटायर 20 to 25 minutes of a free video training which I will be imparting to you all is about how to help you grow your business completely. I will be tackling through 4 or 5 different points which are very very important. सभी all पांचों के points बहुत important है, and these 5 points अगर आपने आपके life में इस्तेमाल किए properly, उसको implement किया, I can guarantee you your business of life insurance will actually take a next step. I can tell you very easily, whatever is your business right now, you can increase your business by 50%. So stay tuned till end, and at the end I'm going to share with you a very 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 powerful opportunity for each one of you so that we can travel this entire journey together. So allow me to open up the presentation here right now, because this presentation is okay. So this is all about financial fitness. See, financial fitness means psychology of money and success. And all these years, we have been into a training industry, training people to take control of their own money. I'll brief you about it, what exactly is there in this entire financial fitness world, right? So before that, let us try to understand. Let us jump down to directly on conclusion कि अभी मार्केट में होता क्या है. See, पहले जब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते थे ना, तो it was more of a one-to-one session. Technology was not there. Now the technology has erupted the business completely. टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारे एडवाइसेस ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, बिकॉज रिसेंट ट्रेंड्स ये बोलता है कि यार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपने डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो यू विल नॉट बी एक्चुअली कोपिंग अप विद द मार्केट एंटायरली। काफी सारे फिनटेक कंपनीज आ गए। हमको ऐसे लगता था पहले कि यार लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जिसको कुछ काम नहीं है वो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। देयर मेनी पीपल हु हैव इंटेंशनली हैज बीन इनटू अ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड आई नो यू मस्ट बी इन दैट इंटेंशनली बिकॉज यू वांट टू सर्व दिस वर्ल्ड, राइट? लेकिन अभी पिछले 8-10 साल में हुआ क्या है, देयर आर लॉट ऑफ फिनटेक कंपनीज कमिंग इन, पेटीएम कमिंग इन सेलिंग इंश्योरेंस, now GPay coming in selling insurance, a lot of financial companies who are actually selling insurance, all these banks selling insurance, and these have a huge data bank। और ये जो लोग काम करते हैं ना, वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम करते हैं, and then we are not coping up with them, and that is why we need to take understand this recent trend in the financial services industry right now. Everybody is trying to build a cognitive side of business, because look at all successful life insurance advisors. They are not just doing going and delivering that one plan and two plan and three plan. They are thinking from a business perspective. Like financial fitness have considered this as a business perspective, and that is why we have grown to whoever we are right now. We need to start rethinking about money, because every person on this earth has started rethinking about this money. थोड़ा भी educated है, थोड़ा बहुत पैसे के बारे में अगर बात करना समझना सीखा है, तो he has started rethinking about money. So as a life insurance advisor, my dear friends, you have to start transforming yourself, because transformation is the key to industry's future। ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपना जो है, इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग अगर खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किए तो थिंग्स विल नॉट बी सेम जो लोग जो पहले थे, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो कोप अप करना बहुत जरूरी है, और ये कोप अप नहीं करते, इसलिए मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स आर फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस राइट नाउ। नॉर्मली देर आर 10 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, तो हम लोग अभी लाइफ इंश्योरेंस को पकड़ के बात करते हैं। म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट एंड स्टॉक मार्केट, ये तो है ही है, लेकिन नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू डेवलप आवर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर म्यूचुअल फंड का आप काम करते हो तो यू कैन एग्जैक्टली यूज द सेम प्रिंसिपल्स फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल्सो। Normally,
challenges की वजह से only 31% of the people insurance agent are active. 22.5 लाख लोग हैं, 130 करोड़ जनता, चलो ठीक है 50% अबव 18 की बात पकड़ते हैं, वर्किंग क्लास पकड़ते हैं, फिर भी इन सबको कैटर करने के लिए सिर्फ 22.5 लाख लोग हैं और उसमें से 31% एक्टिव है. क्यों? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स which are there in the mind of an advisor, and because of that he is not doing that entire business in a professional way. और इसीलिए सिर्फ 31% इंश्योरेंस एडवाइजर्स एक्टिव है. और एक्टिव यानी कि एक आध दूसरा पॉलिसी डाला है, परफॉर्मेंस करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है. नॉर्मली देयर आर फ्यू मेजर challenges faced by each and every life insurance advisor. Normally ये हर एक बिजनेस के challenges है, लेकिन हम लोग लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के challenges के बारे में बात करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज लीड जनरेशन, और लीड जनरेशन हो भी गया तो सेल्स मैनेजमेंट. एक प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने का. उस प्रोसेस को, वो प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, बहुत सारे एडवाइजर्स को मालूम नहीं होता. एक गलती से है, नोइंगली अननोइंगली एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की एक इमेज बन गई है मार्केट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट पीपल आर नॉट गिविंग दैट फुल अटेम्प्ट टू सर्व एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्व एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर. और बहुत सारे लोग रेफरल सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं करते. आई विल बी taking you through all these 5 principles slowly, step by step, so that you can implement everything in your life and take your business to a next level. Let me tell you something brief about myself, because why I'm qualified to tell you all this. See, I'm into personal financial industry since 2004. बहुत फ्लुक से आई हैड बीन इनटू टाटा एआई, बिकॉज 2000 से लेकर 2003 तक आई कंप्लीटली मिसमैनेज्ड माय मनी. और तब जब मुझे पता चला कि यार आई हैव कंप्लीटली गॉन ड्रेन डाउन इनटू फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री राइट नाउ, आई हैव टू लर्न मोर अबाउट इट. सो आई जॉइन टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू अंडरस्टैंड कि यार पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है. तब से लेकर आज तक I am serving into financial planning industry, or you can say life insurance industry, right? So it's almost 6 plus 10 plus 18 years I'm into this particular industry, and that's why I feel I should share my experience with each one of you, right? During all this period I have been official speaker with IIT Tech Fest, विविध भारती वरती माझे खूप सारे पॉडकास्ट झालेले आहेत. सेबी हो, अॅग्रोवन, I have been writing articles on अॅग्रोवन फॉर फार्मर का फाइनेंशियल प्लानिंग, इकोनॉमिक टाइम्स, बिग बक फोरम, सकाळ का जो इन्वेस्टमीट था ना, इन्वेस्टमीट के ऊपर ऑल्सो आई वाज an official speaker. Now I've been also delivering a session with various software companies in Pune and Mumbai. Now, considering all these factors, whatever I've learned from all my mentors, I've floated few companies called as Financial Fitness Club, Kajing Agro Services Private Limited, Project Auto Zone, सह्याद्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो अभी 500 एकड़ की कंपनी है. Why I'm telling you all this? Because in spite of being in life insurance industry, if you open your mind completely, start thinking this is a business, anything is possible in this world. So I want you also to be a part of this particular process, and you start taking your life to a next level, because everything is possible for every person on this world. I don't know whether you are starting your career in life insurance company right now, or you are a pro in life insurance industry right now. There is a growth beyond every ceiling. I repeat, there's a growth beyond every ceiling. So let us try and understand कि हमने आज तक क्या क्या किया है. So to understand more, I treated this entire life insurance business as my business and not a part-time business. So I've invested a lot of money on me. I've directly learned from Mr. Robert Kiyosaki, who is the author of Rich Dad Poor Dad. He is my mentor, and I've been learning from him since quite some time. Right now I have also my personal mentor, Mr. Blair Singer. Why I'm telling you all this? Because it's all about learning. When you are taking this challenge as a business, agar business ko challenge karna hai, to you need to keep on grooming always. I'll take you through all those 5 points, but we need to understand what all things I have done in my life to reach where I am right now.
I've been featured in Sakar, Maharashtra Times, Times of India, Economic Times. I've been writing articles at various stages for 2 years almost in Agro One. I've delivered session to students free of cost so that they take the financial world to next level. I've been taking financial fitness intensive masterclass to various locations across India, right? So let us understand कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री में या आपको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 स्टेप प्रोसेस. I have learned this 3 स्टेप process from Mr. Robin Sharma. What Robin Sharma says कि यार तुमको सुपरफिशियल लेवल पे काम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला. See, look, normally एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर क्या बोलता है, यार इस महीने 15-20 हजार आए तो भी चलेगा, राइट? बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेग, राइट? इस महीने में यार 2 पॉलिसी एक्टिव बनना है मुझे, सो दैट इज वेरी वेरी वेग, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. यार इस महीने में मुझे 5 लाख का धंधा करना है, 5 लाख का फर्स्ट प्रीमियम कलेक्ट करना है. Now this is little bit of a granular thing. Now सिर्फ 5 लाख का प्रीमियम कलेक्ट करना is not going to solve the purpose. You need to actually break this down into more granular space. So you need to understand, अगर 5 लाख का है, अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, आपका नेटवर्क अच्छा है, आपका लीड बैंक अच्छा है, तो you can actually think कि मैं 1-1 लाख के 2 पॉलिसीज करूंगा और 50-50 हजार के 4 पॉलिसीज करूंगा. अगर आपका एचएनआई क्लाइंट नहीं है, अगर आपका मिडिल क्लास क्लाइंट है, तो आप बोलेंगे नहीं 25,000 के मैं 20 पॉलिसीज कर लूंगा. सो यू नीड टू एक्चुअली ब्रेक डाउन दैट इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक वे, बिकॉज ग्रैन्युलर वे ऑफ थिंकिंग विल गिव यू अ चार्ज टू थिंक फास्टर. I repeat, granular way of thinking will help you to think faster. एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस आपके लाइफ में आ जाएगा. होता क्या है कि अगर ग्रैन्युलर लेवल पे अगर आपने डिसाइड कर दिया कि यार मुझे 25,000 के 20 पॉलिसी करने हैं, तो अकॉर्डिंगली यू विल एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर द लीड बैंक. आपके पास अगर आपका रेशियो मालूम है आपको कि अगर मान लीजिए आपको 20 पॉलिसीज करना है, तो आपको कम से कम 50 या 100 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उतने अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, तभी जाके आपको उतने पॉलिसीज क्लोज हो सकते हैं. दिस इज द ग्रैन्युलर लेवल थिंकिंग. यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर ग्रैन्युलर लेवल है तो आपको क्लैरिटी होगी थॉट प्रोसेस में. उसके लिए करना अब क्या पड़ेगा? यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग. You need to start learning, and I congratulate you because you're watching this video, right? Even though it's a free video, you're watching this video, and आज now you're getting better aware about your business, about your life insurance industry. Now once you have this learning around in your life, when you have this better awareness in your life, आप grow करना चालू कर दिया, राइट? बिकॉज आपको क्लैरिटी आ गया कि यार 25,000 के हमारा टिकट साइज है या 50,000 का टिकट साइज है, हमारा 1 लाख का टिकट साइज है. अकॉर्डिंगली आई शुड थिंक, राइट? एंड वंस यू हैव बेटर अवेयरनेस, यू विल हैव अ बेटर चॉइस. आपका लीड सिलेक्शन में अच्छा काम होगा, आपका टारगेट सेगमेंट सिलेक्शन करने के लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज यू आर बेटर अवेयर. नाउ वंस यू हैव दिस बेटर अवेयर, इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बिकम्स वेरी इजी. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये 2 स्टेप्स एकदम तगड़े पावरफुल हो गए, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा. आप जो कोई भी आप बात करते हो, एमडीआरटी बात करते हो, या आप 10 लाख रुपए का इनकम की बात करते हो, और आप जो भी बात करते हो, योर रिजल्ट विल बी वेरी मच डिफाइंड बिकॉज यू हैव प्लान्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रिजल्ट. ये तो सक्सेस फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा सोचने से होने वाला है क्या? कुछ सिर्फ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है. यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली. सो लेट अस गो बैक टू द स्टेप नंबर 1 फर्स्ट. अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करने का टारगेट रखा इस महीने में, या फिर साल की बात करते हैं, आपने 30 लाख रुपीस का प्रीमियम कलेक्शन का टारगेट रखा. सो यू नीड टू ब्रेक अप दैट इन एन एनुअल वे, राइट? सो अगर मान लीजिए वो करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में डिटेल में क्या करना है. जो भी मैंने 5 मेजर चैलेंजेस बताए, उसमें डिटेल में अंदर क्या करना पड़ेगा, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स डीप डाउन एंड लेट्स लाइव डीप डाउन एंड अंडरस्टैंड कि हर एक सेगमेंट में करना क्या पड़ेगा. सबसे फर्स्ट चैलेंज मैंने बोला कि लीड जनरेशन, बिकॉज ब्लड ही नहीं है मेरे पास. लीड जनरेशन इज अ मेजर 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 फैक्टर. बोलते हैं ना कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं है ना, तो आपके लाइफ में कष्ट हमेशा के लिए अमर रहेंगे. बिकॉज
These are the leads which gives you leads which converts into prospects and prospects will convert into customers. So lead bank बहुत important है. That is the problem. Most of the advisor doesn't have any leads at all with them. उनका lead bank zero होता है. तो होता क्या है हमेशा कि आप 2 3 4 लोगों को आपने पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दिया है. You don't have anything to work on. Now one of the gentlemen has told you to call you next Friday. I repeat, call you next Friday. और इसके बीच में ही आपको कुछ याद आ जाता है कि यार उसको फोन करना है, तो आप उसके पहले 4 दिन उसको फोन करते हैं. So you are disturbing the client right now. So we need to understand कि आपको लीड बैंक तगड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, because lead bank or leads are the fresh blood into the system. Leads are fresh blood into the system. अगर लीड्स नहीं आए तो अपना धंधा चौपट हो गया. तो लीड्स के लिए करना क्या पड़ेगा? बिकॉज दिस इज अ डिजिटल एरिया. वो पुराना जमाना गया. अभी बैंक से जाके लीड्स कलेक्ट करना या एटीएम में जाके एटीएम के सामने जाके लीड्स कलेक्ट करना, वो तो होगा ही, बहुत रेयरली होगा. बट नाउ वी आर रनिंग इन अ डिजिटल एरा. यू नीड टू वर्क, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डिजिटल मीडिया वर्क्स, हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, एंड स्टार्ट टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस ऑन इट. आपका खुद का लैंडिंग पेज होना चाहिए, आपका खुद का वेबसाइट होना चाहिए. यू नीड टू रन अ कैंपेन सो दैट यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग लीड्स, बिकॉज ये आपका बिजनेस का फनल है. अगर आपको बिजनेस जीवित रखना है तो बहुत सारे लीड्स आपको चाहिए, और लीड्स चाहिए, वो धंधा है आपका. अगर वो धंधा है, धंधा अगर बरकरार रखना है तो आपको वो मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 90% ऑफ द एडवाइजर्स डोंट डू इट. दैट इज व्हाई दे फेल. So leads are like a fresh blood. You have to continuously work on leads. Lead generation is very important. Use social media and digital media very, very effectively. If you go to my Facebook, if you go to my say search financial fitness in Google right now, search Sudhir Khot in Google right now, you will see a lot of things coming from social media, so that you can easily come across कि what exactly Sudhir Khot is talking about. Say for example, अगर मान लीजिए मैंने कैंपेन रन कर लिया and somebody goes and search for Sudhir Khot, तो होगा क्या कि अरे यार इसने इतने सारे वीडियोस किए, यूट्यूब चैनल पे इतने सारे वीडियोस है, या इफेक्टिव बात करता है. So in that particular case, people will start getting attracted towards you, which will give you a pull strategy. I'll talk about this in a next slide right now. Friends, lead generation is very, very, very important. You cannot live out in this particular life of life insurance without generating leads on a regular basis. अगर आपने लीड जनरेशन बंद कर दिया तो हमारा डिटेरियोरेशन चालू हो गया. दिस इज 100%. मेक दिस मार्क. सो आपके लाइफ में अगर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा डे इन डे आउट यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटेजी टू जनरेट लीड्स. I hope this one point have made a sense to you. If you have made the sense to you, just type yes in the comment box. Just type yes in the comment box. Right? So now, second point is sales management. नॉर्मली केस में होता क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में ना 2 3 पॉलिसीज होते हैं. सेल्स मैनेजमेंट की बात ही नहीं करते, बिकॉज हम लोग तो वो धंधा नहीं करते ना, पार्ट टाइम काम करते हैं हम लोग. यू मस्ट ट्रीट दिस एज अ सेल्स your own business. वो सेल्स मैनेजमेंट, आपका सेल्स मैनेजमेंट ग्रिड, आपका सेल्स ग्रिड ट्रैकिंग सिस्टम एकदम तगड़ा होना चाहिए. यू नीड टू ट्रैक कि जनवरी में कितना हो गया, फरवरी में कितना हो गया, मार्च में कितना हो गया, अक्टूबर में क्या होना चाहिए, उसके लिए लीड्स कितना है हमारे पास, और सिस्टम में पहले लीड डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए. हाउ वी रीच आउट टू ऑल कस्टमर्स, हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग, व्हाट इज माय एवरेज केस साइज, what is my average conversion ratio, am I effectively doing all those communications very, very properly, is my message very clear to the customer. Now all this comes into on sales management because sales is very, very important. My mentor says sales is equal to income. अगर मान लीजिए आपका सेल्स बंद हो गया तो आपका इनकम भी बंद होगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सेल्स इज इक्वल टू इनकम. सो आपका सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम, सेल्स ग्रिड एकदम तगड़ा पावरफुल होना बहुत जरूरी है. एक बार सेल्स तगड़ा हो गया तो अगर सेल्स मैनेजमेंट अच्छा करना है तो आपको सीआरएम इज अ की टू इफेक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम.
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके लिए आपको बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। जे वी आर वर्किंग विद जोहो प्लेटफॉर्म लोग यूज करें। मेरे जितने भी लाखों लीड्स है वो जोहो सिस्टम के ऊपर है, एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम जोहो। बट आपको ये करने की जरूरत नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, आपका गूगल शीट है कि नहीं है, कौन किसने क्या बताया है, किसको कब फॉलो करना है, कौन सा कस्टमर है, कौन सा कस्टमर रेगुलरली आपको बिजनेस देता है, कौन सा कस्टमर एकदम टास्क है, टीडियस है, कौन सा कस्टमर एचएनआई है। You need to understand all this in a customer relationship management sheet or a software, whatever you like it. So sales management is very important. Sales is equal to income. गलती कर देते हैं हम लोग कि अगर मान सेल्स नहीं किया तो इनकम भी नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर नॉट एम्प्लॉयज, वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। एंड अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमको खुद का बिजनेस खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिस्टम डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड मेजर चैलेंज एवरीबडी इज फेसिंग, ऑल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर फेसिंग। होता क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस इज नॉट दैट इजी। दैट्स व्हाई इट हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली स्टेटेड ऑलवेज, इट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड ऑलवेज कि अगर मान लीजिए 20 लोगों को फोन किया तो आपको 5 अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं और एक पॉलिसी क्लोज होता है। सो दैट इज द थिंग। सो देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस, there is always a pressure to sell in your mind right now. It is my mentor says your inner world creates an outer world, because तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. What does that mean? कि you have to start working on your inner world. आपका mindset के ऊपर काम करना बहुत important है. Your inner world creates your outer world. नॉर्मल केस में एक एडवाइजर हमेशा ये बात करता है, यार नहीं जमता, नहीं समझता, ये कस्टमर नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होता, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इट टू मी। नाउ योर इनर वर्ल्ड के ऊपर आप वैसे काम करते रहते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर सेल्स करने का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। एंड जैसे ही सेल्स करने का प्रेशर इंक्रीज होता है, वी टेंड, आई रिपीट, वी टेंड टू गो इमोशनल एंड फॉलो कस्टमर ऑन अ रॉन्ग टाइम एंड वी लूज दैट बिजनेस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये हर एक बिजनेस में है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज अ पर्सनल man to man business, so we need to understand how to handle the stress and pressure against sell. इसके लिए आपको सेल्फ टॉक, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल्फ टॉक, पावर ऑफ सेल्फ टॉक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माय एक्सपीरियंस, आई टेल यू वेरी क्लियरली, the day I started looking for solutions of my problems in me, my life completely changed. उसके पहले क्या होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, नहीं वो सुलझाएगा, वो मुझे मदद करेगा, he will help me, government will help me, and all these problems are actually not in their control, because I am a person who's going to take an action, और मैं जो एक्शन लेता हूं उसी का रिजल्ट मुझे मिलता है। So you need to dive deep into your mind, into your heart, and understand where is the problem and act accordingly. Your one change in your behavior, one change in your thought process can handle this pressure of sales and get to a good, great sales for you in your life. I hope this third point is very 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 clear to you. To just repeat, we were talking about lead generation, then we talked about sales management, and we talked about handling the pressure and stress regarding sales management, right? Now the next one, fourth one, which is again very 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 powerful. आपने एक कस्टमर कर लिया, एक कस्टमर करने के लिए आपने 20 लोगों को फोन किया था, उस 5 अपॉइंटमेंट्स लिए थे। सो नाउ देयर इज वन कस्टमर who is now associated with you. You have to take care of this customer very seriously. You need to review him on a regular basis, because जब एक कस्टमर कोई पॉलिसी बाय करता है तो एक लुक अलाइक कस्टमर की व्याख्या है। लुक अलाइक मैंने, फॉर एग्जांपल, बर्ड्स विद सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। अगर मान लीजिए एक आदमी है, इतना है, आपको 50,000 1 लाख का प्रीमियम देता है, तो उसके दोस्त लोग भी उसी कैटेगरी के होंगे, राइट? So you need to ask a referral from that particular person. Say for example, Mr. A है, A को आपने सर्विसेज दी है, he is very happy with your services, आपने उसका रेगुलरली रिव्यू किया है। Now he is a person who can recommend you to somebody else B,
और बी के पास अब जब जाते हैं तो जब ए ने रिकमेंड किया है तो आपका पूरा का पूरा काम 70% नीचे आ जाता है. यू जस्ट हैव टू गो एंड शेयर योर व्यूज विद द बी. The sales process becomes very, very, very easy. So you need to review your referral system. You need to understand आप रिव्यू कैसे करते हैं. रेफरल एंड रिव्यू सिस्टम के ऊपर आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ विन विन बिजनेस मॉडल. बिकॉज द डे कस्टमर फील्स कि यार ये तो आता है सिर्फ पैसा मांगने के लिए, ये तो आता है सिर्फ पॉलिसी मांगने के लिए, ये तो आता है सिर्फ रिन्यूअल कलेक्शन करने के लिए. बिकॉज जब पैसे पैसे की बात होती है तो ही डजंट फील एनीथिंग अपलॉडेड फॉर हिम. So you need to take care of him and create a win-win business model in some way or other. मैं तो बोलता हूं जो आपका कस्टमर है उसको ही आप पार्टनर बना दो. Treat your customers as a partner, because रेफरल में ये बहुत काम आता है. I'm not talking about sharing the commission. Partner means you actually understand him and start to try to understand कि एक पार्टनर का थॉट प्रोसेस कैसे सॉल्व करना है और उसके लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट लेके जाना है, so that you start becoming a partner in his life, and then he starts recommending you to a various places. So referral and review system is very, very important in each and every person's life, each and every life insurance advisor's life, because ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हम लोग इतने दिन से काम करके जो भी कस्टमर बेस डेवलप किया है वो कस्टमर बेस आपको 10 टाइम्स कस्टमर्स दे सकता है. फोर्थ पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज इयर्स लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का एक टिपिकल इमेज बन गया है. मैं तो किसी के पास साथ से बात करता हूँ तो बोलते सर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जैसे ही आता है ना मैं भाग जाता हूँ. That's a brand which has been created. That's an image which has been created, and that image needs to be tackled up very, very delicately. So for that, you need to create your personal brand. Creating personal brand doesn't mean that कि आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, आपको टॉप सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा. It's not that. You need to do something specific. Be an influencer. आपके 100 कस्टमर्स है, आपके 200 कस्टमर्स है, 500 कस्टमर्स है या 50 है. You have to be an influencer to him. अगर कोई भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, he should trust you and he should come to you. So आपका उसके साथ का कनेक्शन बहुत तगड़ा होना बहुत जरूरी है. He should treat you as an influencer, right? Second point, क्रिएट अ पुल स्ट्रेटेजी फॉर योर इंश्योरेंस बिजनेस. बिकॉज अगर मान लीजिए आपने आपका खुद का पर्सनल ब्रांड एकदम तगड़ा कर दिया, यू पीपल स्टार्टेड कमिंग टू नो यार मैं इसके पास जाता हूं तो मुझे वैल्यू मिलती है. Lot of value which has been given by this particular gentleman, whether he sells anything is not a completely different aspect altogether. बहुत वैल्यू मिलती है. Now creating this pull strategy in this digital era is very 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 easy. पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग होटल लेते थे, we used to book hotel, then call people used to come and then we deliver a session, और वैसे हम लोग करते. Now it's a digital media. I am talking to you now through a digital media. Facebook live we can do, Instagram live we can do, YouTube live we can do, YouTube we can upload videos, you can create your own channel on YouTube. Everything you can do to create that personal brand. Because अगर मान लीजिए आपकी कम्युनिटी है, आपका ग्रुप है, अगर आपकी कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो स्टिकअप रहा तो दैट कम्युनिटी विल नेवर लीव यू एज अ पर्सनल ब्रांड, because the people are getting hooked to that particular personal brand day to day in their life. This is the fifth point which is very very important. I hope all these 5 points have added value to you, and if you actually put down everything on paper, सब कुछ everything nitty-gritties में everything on paper and start decoding that language to a deeper extent, life will be completely different, my dear friends. Because from that particular point in time, we'll start treating life insurance business as a business and not as a part-time work.
नॉट एज अ पार्ट टाइम, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे बिजनेस जैसे उसको काम करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रांड, यू नीड टू वर्क इन योर सेल्स सिस्टम, यू नीड टू वर्क ऑन योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये सब कुछ करने के बाद अगर वो बिजनेस बनना चालू हो गया तो मनी विल फॉलो. मनी विल फॉलो. एट फाइनेंशियल फिटनेस वी आर डूइंग दिस since 2004. What is my current format of working? My working is through webinars right now. Pre-COVID, it was seminars. I used to go and deliver sessions on financial fitness at various places across the country. COVID के time पे we shifted everything to a digital world. Now I'm conducting webinars for Pan India. People come in, people join in, I train them, and people start, getting into the system. Right now, I have a financial fitness, have a paid community of more than 10,000 people. So we need to understand there is a power, there is a huge, huge power which is waiting for us to go and grab outside. You need to follow certain system. और अगर system को follow कर दिया तो definitely I can guarantee you your life insurance business will go to a next level completely. At Financial Fitness, we are working on a mission to elevate the financial literacy of individuals. It's not about just product selling. It's not about just life insurance sales. It's not about just any kind of a product, financial product sale. It's all about elevating the financial literacy of individual. Because अगर मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता हूं तो सेल्स प्रोसेस becomes very very easy. This is my mission, to elevate the financial literacy of individuals. What is my vision? Vision Financial Fitness. Basically, I am in a process to create a trusted advisors, a team of trusted advisors to serve this financial world. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. Just impossible for me to deliver this, make my mission to a next level alone. So I need a team. So when I need a team, I have two options. I create a franchise model. I invite you as a first financial advisor to pay something to me, right? And then I train you. But this model is not workable 100% because होता क्या है कि when you have not experienced the basics of this industry, getting successful in this financial world is very, very difficult. Very, very difficult. And by December 2023, I have a strong plan to create a team of 50 trusted advisors to serve this financial world. Very, very important, because all these 50 advisors will be working on the code of honor developed by Financial Fitness, the rules, the regulations, the ethics, the values, the principles developed by Financial Fitness. All these 50 people will be using the entire systems created by Financial Fitness, and life will be completely different for all these 50 people, because whatever learnings which we have done since 2004, we have implemented to develop this particular system. How many of you are interested? For you, there is a process to it. Where do we stand now? I'll explain you that process right now. Where do we stand now? As of now, we have a strong social media team and presence in digital world. If you Google Sudhir Khot, if you search for on Facebook Sudhir Khot or Financial Fitness, you will see Sudhir Khot at a next level completely. We have been trying to get it onto YouTube right now, trying to create a lot of content videos so that my subscriber base starts growing, and so we start reaching it to as many people as possible. Because in digital world, with one click, you can reach at any place on this globe, any place on this globe, right? So now, since 2017, to create this digital world, digital process, digital brand, digital systems, digital awareness, we have spent more than 50 lakh rupees, and over this 50 lakh rupees, we have generated more than 1 lakh qualified lead bank. This is the power of the digital world. This is the power of creating a brand. We have a systems in place. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हो, अगर गलती से म्यूचुअल फंड वाले आ गए हो, तो we have systems in place. All we need
is you joining with us. All you need is you joining with us through a systematic process, because I don't want to charge you anything for this. But if we charge you as a franchise fee, then I will be limited to very, very, very few people. I don't want to do that. My mission is to elevate the financial literacy of individuals. So as many people in the group, in the room, in the system with the same thought process, same using same rules, regulations, ethics, code of honor, then we will completely change this life of a people in the financial world completely, right? So we need people. So the procedure for doing this is very, very, very simple, right? We have the lead bank spread across the India. We have created a win-win business model with the power of leveraging. The procedure is you have to be a part of this win-win business model, and we have a strong plan to spread our services wing right now. So let us join our mission to elevate the financial literacy of India. Let's together elevate the financial literacy of India. If you are interested, make sure you type in comment in yes in the comment box, because I would love love listening to your comments, because this mission of mine, I know most people laugh at my mission because it is much more bigger, much more powerful, but I know it very well. With the help of your connection, with your association, we can tackle this mission very, very, very carefully and easily. Once we start working on the mission, money and real wealth will follow definitely. Procedure. Wondering, right? इतना कुछ तो बता दे यार, join करने का कैसे, वो तो बता दे. So one thing, I know you are a life insurance advisor right now, or a mutual fund advisor right now. You are into this particular industry right now. Whoever you are, I don't know. You have to be into the system through Tata AIA Life Insurance Company Limited. You have to join Tata AIA Life Insurance Company as an insurance advisor under the team of financial fitness. You must be thinking right, यार मेरा तो ये already license है, क्या करूं? आपको surrender करना पड़ेगा. अगर surrender नहीं करना है तो आपको surrogate license लेना पड़ेगा. अगर आप स्पाउस के नाम पे ले सकते हो, या भाई के नाम पे ले सकते हो, किसी और बेटे के नाम पे ले सकते हो, किसी के भी नाम पे ले सकते हो, एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? We will be using or giving you all financial fitness methodology to improve your life insurance business. आपका जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको स्केल अप कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, जो भी हम लोगों ने फाइनेंशियल फिटनेस का मेथोडोलॉजी आज तक यूज किया है, उसको हम लोग आपके पास लेके आएंगे. यू कैन यूज दैट. इंश्योरेंस ट्रेनिंग, लाइफ इंश्योरेंस ट्रेनिंग जो है विल बी गिवन बाय टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिकॉज इट्स देयर डोमेन एक्सपर्ट. दे हैव लॉट ऑफ ट्रेनर्स. I'll keep on giving this training on a regular basis, because these are most trusted brand. I have been with Tata AI since 2004, and Tata ka brand is a trusted brand. So they have a very strong training system which will be imparted to each one of you. Financial fitness will handhold you on mental world, आपका जो inner world, psychological behavioral pattern of the customers, emotional way of thinking, and physical sales activity. We will handhold you on this. This is very, very important, because सिर्फ प्रोडक्ट का ज्ञान लेने से फायदा नहीं है. अगर आप जब तक इनर वर्ल्ड में स्ट्रांग नहीं होते हो, आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपका प्रोसीजरल स्ट्रांग नहीं है, देन कितना भी प्रोडक्ट अच्छा हो, आपका सेल्स विल बिकम जीरो. To execute all those sales, we will train you on this mental, physical, emotional, and outer world, right? So we need to understand this very, very, very carefully, what we will be doing with you all. And then we will ensure, we will nurture every associate to become better version of yourself. Sales hove na hove, but I can guarantee you, you will be better version of yourself. Any which ways, I am not paying you anything, you are not paying me anything, but it's a good choice to start working together, at least become better version of yourself, because inner world creates your outer world, and that is what where we will be working a lot on this. आप अगर एक स्टेप आगे आते हैं तो we will come 10 steps, right? 10 steps. By December 2023, I have a dream
of creating a 50 top performing advisors. I mean, ये top performing advisors क्या है? You will be working under financial fitness, so you will earn the money for all the policies you will be putting in. And over and above, there's a business associate system from which we will earn some money. So it's a creating a perfect win-win business model. You earn आपका commissions, जो भी आपका आपको मिलेगा. हमारा जो है as a business associate we will get from everything ourselves. So जो top performer है in Tata AI है, we will have a strong franchisee agreement and revenue sharing model with top 50 advisors. ये financial fitness का franchisee model है. जो भी सिस्टम मैंने बिल्ड किया है, वेबिनार मॉडल बिल्ड किया है, हमारा जो डेटा बैंक कलेक्शन का मॉडल है, हमारा जो सेगमेंट सिलेक्शन का मॉडल है, हमारा जो कस्टमर रीच आउट करने का मॉडल है, एवरीथिंग will be shared with you, and we will have a clear cut franchisee agreement and start sharing the revenue with each one of you. Mission is very simple. अगर मान लीजिए all these 50 advisors, 50 top people are very good in communication, very good in delivery, have a strong integrity, are very sincere, honest, then whatever I teach to you, or I take a webinar for various people across the world, at the same time we will be start having 50 webinars on a same day at same location. Entire backend system will support you. You just have to deliver the content. The details about the franchisee will be shared with each one of you once we reach to a certain stage. Not now, right? Criteria for selection is very simple. Your sales performance as Tata AI life will be taken into consideration, and your initiative to become a better version of yourself. Because I strongly believe the context, the code of honor, the integrity, the values you have will help you to make who you are, right? And that is why these two criteria are very important. The powerful point about this particular entire system is you are not investing anything to gain the franchisee. You are actually working right from the ground level. I repeat, you're working for the ground level and then proving yourself. In the bargain, you also earn a lot of money. And for training you, we also earn money through our business associate system. And the process, you become a better version of yourself, and then we can start delivering a massive value to people to elevate the financial literacy of India completely. If you are in tune with my mission, you want to be a part of this financial fitness world, you want to serve this community, serve India, to upgrade their financial literacy, join our mission. Let's together elevate the financial literacy of India. कमेंट बॉक्स में या फिर कई डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है और एक दो नंबर भी दिए हैं. Make sure you click on that WhatsApp group and join that group. Once you join that group, my team will connect with you to understand who you are, कहाँ से हो आप करते क्या हो, आप कौन से कंपनी से अभी लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, what are different aspects we can work together, and then we'll take a next step. I hope this entire session was valued session for you. कंपल्सरी नहीं है आपको ज्वाइन करना. जो पहले 5 मुद्दे हैं, अगर आपने उस 5 मुद्दों के ऊपर काम कर दिया तो you can start working on yourself on a regular basis. But I would love team up. I would love to work together, because whatever mission I have, it's not a one-man job. It's a teamwork. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको नहीं करना है, आपको लगता है कि और कर सकता है, तो please make sure you share the original first video to all these people so that we get connected with each other. Thank you so much for being patient, being till end of this training session. I would love seeing you in the WhatsApp once again. I would love seeing you in the group and start working with each other. Thank you so much. See you very soon and wish you a very best of luck for your life insurance business. Bye-bye.